Joining us today at the India Sustainability Mission is Mayank Agrawal, CEO of steel manufacturing giant Gallantt Group of Industries. Warm welcome to the stage and thank you for associating yourself with this mission. Mayank, अगर मैं इस चीज़ से शुरू करूं कि आपका अपना अनुभव है एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, उसके प्रोसेस को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए. So you are the right person to tell us what are the key challenges which the Indian industry right now faces vis-a-vis sustainability. Good afternoon, everybody, and thank you for having me here. And it's first of all, I would like to say that it's a great initiative that NDTV is taking here. Talking about challenges in industry, I think India में challenges multifaceted हैं. Energy sector हमारा करीबन 1/3 emissions के लिए देता है नेशन के कंट्रीब्यूशन में, और आज की डेट में इंडिया लार्जेस्ट ग्रीन हाउस एमिटर है वर्ल्ड का. तो टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, हम इस चीज़ में सबसे आगे हैं आज की डेट में दुनिया में, जिस चीज़ में नहीं होना चाहिए. हैविंग सेड दैट, एनर्जी में ऑल्दो गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया है, काफ़ी रिन्यूएबल आ रहा है, बट इवन टुडे इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू द एमिशन, and that poses a great challenge. Talking about manufacturing industry also contributes about 20% to the emission levels in the nation. और उसमें steel, cement और aluminium manufacturing main contributors हैं, because they are very carbon oriented and energy oriented industries. इस industries के अलावा अगर बात करें तो आज की डेट में हमारा एग्रीकल्चर में हमारा किसान आज भी 85% के आसपास फ्रेश वाटर यूज़ कर रहा है एग्रीकल्चर करने के लिए, जबकि ड्रिप इरिगेशन और तमाम ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं कंट्री में जिनको इनकॉर्पोरेट करने से ये वाटर कंजम्पशन काफ़ी ड्रास्टिकली डाउन हो सकता है. तो ये सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं, और द मेन इशू इज़ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और क्लाइमेट कंट्रोल को बैलेंस कैसे करना है कंट्री को, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप नहीं रोक सकते. हमारा कंट्री का जीडीपी 7 से 8% के रेंज में ग्रो कर रहा है. तो अगर 8% के रेंज में जीडीपी ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रही है, एनर्जी की डिमांड भी 10 से 15% हर साल बढ़ रही है, जिसको अकेले रिन्यूएबल एनर्जी नहीं हैंडल कर सकता. कोल फायर्ड बॉयलर्स गवर्नमेंट भी लगा रही है, प्राइवेट लोग भी लगा रहे हैं, रिन्यूएबल भी लगा रहे हैं. तो जीडीपी अगर आपका 7 से 8% ग्रो हो रहा है और इकोनॉमी डेवलप हो रही है, तो उस इकोनॉमी के डेवलपमेंट में और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए बैलेंस कैसे करना है कि हमारा ग्रोथ इंक्लूसिव हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो और सस्टेनेबल हो. So these are the challenges that we as a growing and developing nation are facing today. आप कह रहे हैं बैलेंस हो, बीच का रास्ता हो. स्टील इज सेंट्रल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड इट्स ग्रोथ. सो और आपने खुद माना कि स्टील इंडस्ट्री जो है हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के. ऐसे में बीच का रास्ता अगर तय करना है आपकी इंडस्ट्री को, तो क्या स्टील मेकिंग को डीकार्बनाइज किया जा सकता है? पॉसिबल है? देखिए, ये आज की डेट में स्टील करीबन 12% कंट्रीब्यूट करता है एमिशंस को इंडिया में, और ये बिल्कुल पॉसिबल है और इस दिशा में काफ़ी काम हो रहा है. अगर स्टील के बारे में हम स्पेसिफिकली बात करें तो स्टील के कार्बन की रिक्वायरमेंट 2 प्रकार की है. एक तो एनर्जी काफ़ी कंज्यूम करता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग, तो एक तो बिजली बनाने के लिए लॉट ऑफ फ्यूल, फॉसिल फ्यूल इज़ यूज्ड, दैट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट. And also, if we talk about manufacturing process, that also consumes a lot of carbon. So, energy की अगर बात करें तो आज की डेट में सोलर काफ़ी पॉपुलर है, सोलर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है. 150 गीगावाट के आसपास इंडिया आज की डेट में सोलर बना रहा है, और सोलर में इंडिया नंबर 3 पे है ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो 3rd नंबर से है, और 2030 तक इंडिया का टारगेट है कि 500 गीगावाट सोलर बनाना है. तो एनर्जी की बात करें तो रिन्यूएबल विल हैंडल इट. अगर हम लोग प्रोसेस की बात करें तो हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट. हाइड्रोजन कैन प्ले अ वेरी बिग रोल. अभी रिसेंटली करीबन 6 महीना पहले स्टील इंडस्ट्री में टाटा ने एक ट्रायल किया, कुछ घंटे के लिए हाइड्रोजन को परचेस करके वहाँ टैंक्स में ला के और अपने प्लांट में ब्लास्ट फर्नेसेज में इंजेक्ट किया. एंड उनकी रिपोर्ट ये कह रही है कि करीबन 40 से 50% कोल को
ब्लास्ट फर्नेस में ये हाइड्रोजन से रिप्लेस कर सकते हैं, विच इज़ वेरी एनकरेजिंग एंड नाउ टाटा इज़ वर्किंग ऑन इट टू मेक इट कॉस्ट इफेक्टिव। पहला वर्ल्ड का पहला ग्रीन स्टील मेकिंग जहाँ पे ना कोई जीरो कार्बन फुटप्रिंट होगा, वो पहला प्लांट वर्ल्ड का 2 मिलियन टन का स्वीडन में इंस्टॉल हो रहा है, जिसको पूरी दुनिया के तमाम बैंक्स ने और एसोसिएशंस ने फंड किया है। और इसमें निपॉन जो कि वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा स्टील उत्पादक है, निपॉन, स्कोडा जो कार मैन्युफैक्चर करता है, और सर्टेन टेक्नोलॉजी पार्टनर्स, इन तीन का ये जॉइंट वेंचर है, जिसमें स्कोडा ये कहता है कि कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए हम आपसे 15% एक्स्ट्रा प्राइस पे लोहा खरीदेंगे जो इस यूनिट से बनेगा, बिकॉज इट इज़ ग्रीन स्टील। टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर अपनी टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है और उस पर ये लोग R&D कर रहे हैं कि हाउ टू मेक इट मोर कॉस्ट इफेक्टिव। तो आप कह रहे हैं कि मिसाल है दुनिया भर में जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप स्टील इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्टील की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको रिसाइकल किया जा सकता है। तो क्या रिसाइकलिंग स्टील कैन हेल्प इन काउंटर द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट? देखिए, गवर्नमेंट ने जो अग्रेसिव स्क्रैपिंग पॉलिसी अभी लॉन्च की है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 2030 तक लगभग 10 मिलियन 9 से 10 मिलियन टन स्क्रैप अवेलेबल होगा फॉर स्टील मेकिंग बिकॉज ऑफ द रिसाइकलिंग पॉलिसी, स्क्रैपिंग पॉलिसी। 10 मिलियन टन को अगर हम पर्सपेक्टिव में डालें तो आज की डेट में हिंदुस्तान 100 मिलियन टन लोहा बनाता है। तो अगर 9 मिलियन टन स्क्रैप मिलता है तो 10% सीधा सीधा आपका प्रोडक्शन स्क्रैप से हो सकता है, क्योंकि स्क्रैप को जब आप स्टील में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कार्बन फुटप्रिंट ना के बराबर है, एनर्जी उसमें आधी लगती है, कार्बन फुटप्रिंट चौथाई लगता है, 1/4, और एट द सेम टाइम जो प्रोडक्शन आप स्क्रैप से कर रहे हैं उसको करने के लिए आपको नेचुरल रिसोर्सेज भी कम कंज्यूम हो रहे हैं माइनिंग के द्वारा, जैसे कोल, आयरन ओर और लाइमस्टोन की प्रोपोर्शनेटली माइनिंग कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो डुअल रोल, सर्कुलर रोल प्ले कर रहा है। तो स्क्रैपिंग पॉलिसी कैन बी अ गेम चेंजर बिसाइड्स हाइड्रोजन टू रिड्यूस एमिशंस इन स्टील इंडस्ट्री। That's the way forward for steel. But talking about Gallantt, how have you innovated to reduce carbon emissions and make your steel production more sustainable? How do you ensure sustainable supply chain at Gallantt? गैलेंट की हम लोग बात करें क्योंकि तो कहा जाता है कि it starts with you and me. Yes, तो yes, बिल्कुल। what are you doing at Gallantt? इट इज़ ऑल, जैसे उन्होंने कहा था कि अपने पहले खुद को सोचना पड़ता है, तो इसमें हम लोगों ने एक टारगेट बनाया है कि हमारा कम से कम 25% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हम लोग सोलर से रिप्लेस कर रहे हैं, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट्स हमने काफ़ी कुछ ऑलरेडी कर दी है और बैलेंस इन प्रोग्रेस है। बिसाइड्स एनर्जी, in order to reduce the carbon footprint, we are making a lot of changes in our manufacturing facility to make it more energy efficient. काफ़ी उसमें हमने केपेक्स इन्वेस्ट किया है, जिसमें हमारी कम से कम आज की डेट में ही अगर बात करें तो पिछले 5 साल में हमने करीबन 20% एनर्जी एफिशिएंसी बेटर की है अपने प्लांट की, देयर बाय रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस। तो ये सारी तमाम चीज़ें हैं जो काफ़ी हम लोग इस पे वर्क कर रहे हैं, एंड वी आर विद द गवर्नमेंट, विद द पॉलिसी एंड विद द माइंडसेट ऑफ अटेनिंग सस्टेनेबिलिटी। विकास के साथ इंडस्ट्री चले, ये बात आप लगातार कह रहे हैं। इंडस्ट्री का हर एक शख्स कहता है कि बैलेंस होना चाहिए, लेकिन अब इस बैलेंस के लिए तब्दीलियाँ, चेंजेस ज़रूरी हैं। व्हाट चेंजेस डू यू फोरसी और यू एक्सपेक्ट दैट विल मेक इट ईजियर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल काइंड ऑफ इंडियन इंडस्ट्री? जो सबसे बड़ा, जैसे एनर्जी और स्टील काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूटर है, तो जब तक एनर्जी, स्टील, सीमेंट एंड एल्युमिनियम में चेंजेस नहीं आएंगे तब तक सब्सटेंशियल चेंजेस हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे। रिन्यूएबल इज़ वन वे फॉरवर्ड, विंड की भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, विंड जनरेशन भी काफ़ी बढ़ रहा है। सो दीज आर द 2 एस्पेक्ट्स विच गवर्नमेंट इज़ डूइंग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैन्युफैक्चरिंग के बात करेंगे तो हाइड्रोजन इनिशिएटिव जो है अभी इट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, बट लॉट ऑफ स्टडीज एंड लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर बीइंग डन by giants and by government to make it cost effective in terms of technology and production. और हाइड्रोजन ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ स्टील में नहीं यूज़ होनी है, एनर्जी जनरेशन में भी यूज़ होनी है, रिफाइनरी में भी होनी है, वेर एवर यू रिक्वायर एनर्जी। तो वो सीमेंट में भी एप्लीकेबल होती है, रिफाइनरी में भी होती है, स्टील में भी होती है। तो आई फील स्क्रैपिंग पॉलिसी, हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स, रिन्यूएबल एनर्जी आर द मेन एस्पेक्ट्स
which are going to contribute to our future. And that's what you are looking at. And thank you so much. And as we always say, lead by example. So Gallantt Industry, like you said, is leading by example, doing it at your level, the sustainable production and the sustainable supply chain. Thank you, Thank Mayank you for Agrawal, having me once joining again. us. Thank you so Thank much, you ma'am. so much. Thank you. Big round of applause for him. We have with us Mr. Cassio Simoes, Managing Director of Tetra Pak, a company that is a global leader in innovative and sustainable packaging solutions. Mr. Simoes has extensive experience in driving business growth and sustainability initiatives and plays a pivotal role in advancing the company's commitment to a circular economy. It's a pleasure to have you with us, Cassio. Thank you so much for the invitation. It's a pleasure for being here after 15 months now in India. Great to have you here. And I think for a very critical conversation, which really is the need of the hour, the first thing, Cassie, I would like to ask you here is, you know, Tetra Pak is a B2B company, and yet it is often or most often known as, when it comes to sustainability discussions, as more outspoken and a very active brand. Tell our viewers, tell our audience here, why is that so? Okay. Let me share with you a short story to help me answering this question. Many years ago, in 2017, I was part of a group of executives in Brazil that we went to Stockholm in Sweden to have this innovation week there. And it was actually the mission of this team was to see how Sweden is connecting the startups with the government, with the academia, and also with the industry, and talking about pure innovation. And I had the opportunity to have one session with the seat development department in Stockholm, and it was very interesting to see how they were connecting. I mean, they were building this ecosystem of startups, supporting the development department on their sustainability goals. Stockholm wants to be one of the most sustainable cities in the world. And it was, this guy was presenting this beautiful project that they want to use the organic waste of Stockholm to make biogas and feed the heating systems of the houses during the winter time. And when he was about to end the presentation, I came with this, it was quite funny because it was quite a silly question. What is the payback of this project? And he frowned at me, and what do you mean with payback? I said, yeah, payback, it's a huge investment. No, there is no payback. Payback is not a decision factor for moving on with this project. It is, I mean, this is a long-term vision, long-term commitment in terms of sustainability for Stockholm City. At that time, I did realize that this environmental stewardship is a core value to Sweden. And most of our sustainability commitments in Tetra Pak, they come from this Swedish heritage. But just a thing on perception, customers, of course, play a very important role, but a common perception amongst the consumers is that Tetra Pak, whether it's the packaging, whether it's the product, whether it's the cartons, are not recyclable. How will you change that perception, and why do the customers have this perception? Yeah, interesting question, because first time when I landed in India, 1st June of last year, I was going through the immigration counter, and this officer, when he saw my passport, my visa, do you work for Tetra Pak? Yeah, yes, I do. Yeah. Oh, why your cartons are difficult to recycle? And it was my first interaction in India explaining to this gentleman that, no, I mean, it is recyclable. And I told him the whole story behind. But yes, we do recognize that there is a lack of awareness from the consumer side when we talk about recycling of Tetra Pak cartons. Actually, what I have realized is that the consumers, they don't know about the whole advanced recycling process that we have established here in India.
You know, they have no clue about it, you know. And cartons, our carton packages, they are composed of 75% paper, 20% polyethylene, and 5% aluminum. All of them, all these materials, they are fully recyclable, and they have been recycled in India, individually or when they are together. So like you said, you know, lack of awareness. What really is the company, what is Tetra Pak doing to change that perception? Yeah, and as we recognize that we are using these sort of photos to promote the recycling of Tetra Pak cartons. We are using our social media platforms, because we see three main perceptions here, you know, in India. The first one is that Tetra Pak cartons are difficult to recycle, you know? But it's not. You know? Tetra Pak is fully recyclable packaging. You know? And you have three ways of recycle Tetra Pak packaging. First one, you don't need to separate any layer of this package. You put all of them together. You compress with temperature and pressure, and you can manufacture this type of, I have one example here. Great, you're carrying it to show us. Oh, wow. It is a composite sheet. With this kind of material, you can build pallets, you can build furnitures. Even in South America, we build houses with this sort of material. You know? So the second one is that 70%, 75% paper. You just put all the cartons in a hydra pulper, that is a big mixer, you know, with water. You don't need to add anything. There is no need for enzymes, any sort of other product. Just water, and with mechanical action, you can extract the whole paper of this carton. And you can use this paper in paperboard applications. And there is a third element that is an innovation that we are exploring now in Europe, that with the chemical recycling, you can separate the three layers of cartons. So a lot is being done on that sphere. Thank you for sharing that with us. Obviously, it is your interest to sell more, but I think as all of us, as citizens, one worries about overconsumption. Tell us, how does one maintain that balance? I always split this in two different aspects. Just for you to give some figures, because this overconsumption word I do think that we can grow the business without talking about overconsumption. If you think about, according to World Bank, in 2050, we are going to be 10 billion people in this planet. You know, today we are 8 billion. You know? 30% of the whole food produced in the world today is wasted, okay? And most of it is related to not having an appropriated packaging. If you take into consideration in this equation as well, that under development countries, they will grow fast, people will have a better income per capita, and consumption will grow as well. So you see that this whole equation shows us that in 2050, we need 60% more land to feed the whole population. So there is a huge blue ocean to be conquered in terms of growing the business. You know? We grow the business, you know, we can decouple our growth, you know, when we talk about the environment as well. I mean, from 2010 to 2020, Tetra Pak grew the business while we reduce our carbon footprint in 70%. Yes. You know, just a last question, like you're saying, the initiatives Tetra Pak is doing, but just quickly before we wrap, I want to ask you, I think it's a very critical question here. When, as consumers, very often we just think about recycling. You know, it's the best way as sustainability. But when, as brands, when they think of sustainability, there's so much more. There's carbon emissions, there's net zero, climate goals. What is your pitch as a partner to some of the biggest F&B brands? I mean, our pitch to customers definitely is not only about recycling. You know, we know that we give them all the spectrum about sustainability. You know, and what I see here in India is that all the customers that I have interacted, they are all thinking about sustainability because they know that it's a license to operate. Okay, all of them, they have clear goals. Some of them in more advanced phase, some of them in less advanced phase. But
they are thinking about that. And what is the commitment, or what is our pitch from Tetra Pak to them? You know, we are not only a packaging material company. We also build food processing equipments, so we can help them to meet their net zero goals with equipments that can reduce energy consumption, electricity, water waste in their factories. That's what we know how to do it. We had the knowledge to do that. And you have been doing it for a while. It's been a pleasure to have you with us today here. Thank you so much for joining us, Mr. Cassio. Thank you so much. A big round of applause, please. Just one last word. I mean, sustainability is not only about the industry and the government. You know, it is not an individual effort. It's a collective effort. I used to say that we can, alone we can do so little, but together we can do so much, you know, and I keep repeating even in Hindi, you know, Akili humbu ho, kan hasil kar sakti hai. Saath milkar humbu ho, kuch hasil kar sakti hai. Whoa! Thank you so much. And definitely we can do it collectively. Thank you so much.